So I checked it from that. Adjusted r square is equal to 1 minus r square n minus 1 n minus k minus 1. And I was just dwelling on these various aspects of this adjusted r square. The more, what is n? N is the total number of items. Sample size. N minus 1 is called as the degree of freedom. And what is k? K is the number of independent variable. K is the number of independent variable. Okay. Now for any given r square, let's say I take r square is equal to 0.4 and n is equal to, let's say, 10. Okay. Just see the effect of k, what it will be there. So it will be 1 minus 0.6 into 10 divided by, if I'll say k is equal to just 1 is there, it will be 9. Am I correct? Or am I too fast? See, I am taking a hypothetical case where r square is equal to 0.6. What I am doing, I am just checking whether whatever I said yesterday, that if you increase the number of items, r square will always go increase. Always. But adjusted r square after level will decrease. I am just validating whether it is true or not. K is equal to 1, then I will take 3, 4, etc. And I have taken as the 10. So what is the formula for adjusted r square? 1 minus r square 0.4 into n minus 1, that is 9, divided by, now in this formula other things will be same, only we will change the value of k. So if k is equal to 1 there, so it will be 8, right? If k is equal to 2, this will be 3.6 divided by 7, go on decreasing. If it is 10, so what it will be? Again it can't be. 9 minus this, it will become 1. So as you see, the more we are taking this, the value of r square, adjusted r square, going on decreasing. See, this value will be larger or this value will be larger. जितना नीचे डिनोमिनेटर छोटा होता जाएगा, ठीक है, उतना नेगेटिव, टोटल नेगेटिव होता जाएगा ना, उतना कम होता जाएगा. तो अगर आपका r स्क्वायर सेम है और आप सिर्फ k को ऐड करते जा रहे हो, तो क्या होगा? आपका ड्रास्टिकली एडजस्टेड r स्क्वायर गिरता जाएगा. तो ओनली ऑप्शन इज, अगर नया एडिड वेरिएबल इसको बढ़ाए तभी बच सकते हैं. नया जो ऐड किया वो इसको इंप्रूव कर दे तो इंप्रूव हो जाएगा. अगर उसको इंप्रूव नहीं कर रहा तो वो नीचे गिर जाएगा. दिस इज एडजस्टेड r स्क्वायर. सैंपल साइज सेम रहेगा और गिरेगा ही गिरेगा. नाउ द प्रॉब्लम इज, व्हाट इज द minimum sample size for regression? Is there any formula? ये तो हमने कभी सुना ही नहीं. रिग्रेशन में मिनिमम साइज होता है. हाँ, मिनिमम साइज होता है. और ये किसने दिया था? गार्डन ने या किसी और ने? ऐसे नंबर से 1 प्लस 2 फार्मूले इसके, 108 प्लस n and 1 is I forget. It's better to see and then tell you. मेरे पास फाइल में, मैं देख के बताता हूँ. इसका फार्मूला है, मतलब मिनिमम आपका 58 है, या 50 प्लस 8, ये मिनिमम सैंपल साइज है, वेयर के इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. सो दैट मींस इफ यू गॉट वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मिनिमम इज 58 ऑब्जर्वेशंस. हम तो 15 पे लगा देते थे रिग्रेशन, 20 पे लेके 20 पे रिग्रेशन लगा दिया. स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स विल नॉट बी वैलिड. जो लोगों ने काम करके दिया है उन्होंने कहा मिनिमम ये है, और दूसरा फार्मूला 108 प्लस समथिंग एल्स. ये 2 फार्मूले जो भी मैं छोटा था, एक ओवरऑल मॉडल फिटनेस के लिए, एक इंडिविजुअल फिटनेस के लिए. द पॉइंट इज द फ्रेंड्स, हो क्या रहा है कहने को, तो हम ये एडवांस वर्कशॉप कर रहे हैं, बट अगेन थोड़े से फंडामेंटल उतने क्लियर नहीं है जो कि होने चाहिए. सो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं आपको r स्क्वायर या रिग्रेशन ही करवा रहा हूँ, आपकी बाकी चीजें नहीं. टू बी मोर प्रिसाइज, आपको अभी भी ये पता है यहाँ क्लिक करना है, ऐसे क्लिक करना है, ये आ जाएगा. पर एक्चुअली इंटरप्लेट क्या चल रहा है, क्यों आ जाएगा, उनसे कैसे अंदर से डाटा देखना है रिग्रेशन का, एक बार जब तक नहीं करें तब तक मुश्किल है. करने के बाद आपको लगेगा बस ठीक है. सो दिस इज अबाउट समरी ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग बाय डूइंग पाथ एनालिसिस चैप्टर वाइज. Some say this should be written this way. In some university they say, perhaps in the Thapar University they say, every objective will be one chapter. Okay, some others they say there is only one data analysis and all objectives will be discussed there. Stick to your university guidelines.
There are two things. We have to operate into two domains. One domain is related to the PhD. That's a very separate thing. Don't mix up the two. PhD, go as per your guide instructions, go as per your university norms. Writing the paper, go as per the international standards and papers. Don't mix up the two. I remember one of the outstanding scholar in MD University has written that way, and the experts say you don't know how to write. So it should be MDU format is more important than international standards. It should always be, whatever, there is only one thing, it should always be reverse chronological and theme based. Theme based means if I am writing about the quality, loyalty and satisfaction, quality at one place, in the reverse chronological, loyalty at one place and third at the one place. It should be like that. It should not be a jungle of collection of studies, as Dr. Balwinder mentioned again and again, and I also mentioned the same. Most of the people in the name of review of literature, they write collection of studies. What do you write? Simply you write this study, this study, this study, this study, 70, 80 study, as is evident from the above. Nothing is evident. There are 70, 80 things you have written, nothing is evident. It should be theme based. You write one statement and then references in the paper format. In the university format, still the universities are, in that stage.